welcome back to the catalytic classes. So in the previous lecture we have solved NCERT numerical problems of some basic concept of chemistry till question number 23. So in today's lecture we will solve questions from question number 24, right? So let's take question number 24. Question number 24 is dinitrogen and dihydrogen react to form ammonia. So question number 1 is calculate the mass of ammonia if 2000 gram of dinitrogen react with 1000 gram of hydrogen. So here we have to calculate the mass of ammonia. So first of all we will balance the chemical equation. So dinitrogen plus dihydrogen gives 2NH3. So here hydrogen is 6. 2 into 3 is equal to 6 atom of hydrogen is there, and here only 2 atom. So now this is balanced chemical equation. N2 plus 3H2 gives 2NH3. So first of all we will calculate the mass of each reactant and product. So here N2 plus 3H2 gives 2NH3. So 2 into 40 equal to 28 gram. 3 into 2 equal to 6 gram. And here 14 plus 3 into 2 equal to 34 gram. It means 28 gram of dinitrogen react with 6 gram of hydrogen to form 34 gram of ammonia, right? So we can write here 28 gram, 6 gram and 34 gram. So we have to calculate here the mass of ammonia. So amount of ammonia will be कितना हो जाएगा? अमोनिया दिया है 34 डिवाइडेड बाय 28 into how much mass of dinitrogen? 2000. So 2000 gram of dinitrogen. So amount of ammonia will be 34 divided by 28 into 2000 gram of dinitrogen, right? So solving this we will get around 2430 gram. So the mass of ammonia will be 2430 gram, right? So the next question is will any of the two reactant remain unreacted? So B is will any of the two reactant remain unreacted. So दो रिएक्टेंट है N2 एंड डाइहाइड्रोजन. सो इनमें से कौन सा अनरिएक्टेड होगा? सो वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन हियर. सो द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन that will react with 2000 gram of dinitrogen. So 2000 gram of dinitrogen से कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा हम वो कैलकुलेट करेंगे. तो वो क्या हो जाएगा? 6 by 28 हाइड्रोजन मास ऑफ डाइहाइड्रोजन 6 ग्राम. 6 by 28 into 2000 gram. So it will come around 400 something. So 428.6 gram. So 428.6 gram and the amount of hydrogen कितना दिया था? 1000 gram दिया हुआ था. So 1000 gram of hydrogen is given, but how much is reacting with 2000 gram of dinitrogen? Only 428.6 gram. तो कौन सा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से
कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेस में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन 1000 ग्राम प्रेजेंट है और ओनली 428.6 ग्राम यूज्ड अप हो रहा है। सो आंसर विल बी हाइड्रोजन, राइट। सो थर्ड इज इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक्सेस में, कितना एक्सेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सो वी विल कैलकुलेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1000 ग्राम। 1000 ग्राम माइनस 428.6 gram is equal to, so solving this we will get the excess amount of hydrogen that is present in the following reaction, right? So coming to the question number 25 now. So question number 25 है how are 0.50 mole Na2CO3 and 0.5 molar Na2CO3 different. So we have to calculate here what is the difference between 0.5 mole Na2CO3 and 0.5 molar Na2CO3 में difference क्या है? तो मोलर मास, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट दी मोलर मास। मोलर मास ऑफ Na2CO3, सोडियम का 2 into 23 हो जाएगा, प्लस फॉर कार्बन इट्स 12 एंड फॉर ऑक्सीजन 16 है एंड 3 एटम्स आर देयर, तो 3 into 16 ऐड करेंगे तो 106 ग्राम आ जाएगा। तो 1 मोल ऑफ Na2CO3 में 106 ग्राम होगा। 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू 106 ग्राम। तो 0.5 मोल में क्या हो जाएगा? जस्ट हाफ ऑफ दिस, सो 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू 53 ग्राम, राइट। तो द वैल्यू ऑफ दिस इज 53 ग्राम। So 0.50 mole of Na2CO3 is equal to 53 gram of Na2CO3. Similarly 0.5 molar calculate करेंगे। So 0.5 molar, molar means it is denoting molarity, right? So molarity equal to क्या होता है? Number of mole of solute divided by volume of solution in liter. So number of mole will be 0.5 mole, it means 53 gram, right? Dissolved in 1 liter of solution. So 0.5 molar मतलब 53 gram of Na2CO3 dissolved in 1 liter of solution, right? So this is the difference between 0.5 mole Na2CO3 and 0.5 molar Na2CO3, right? So coming to the next question, question number 26. So question number 26 is if 10 volume of hydrogen react with 5 volume of dioxygen, then how much volume of water vapor will be formed? So अगर 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वाटर वेपर का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा? सो हम रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट। सो इसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, यहाँ पे 2, सो वी विल बैलेंस बाय राइटिंग हियर 2. So 4 hydrogen, so we will equalize here by writing 2, right? So 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. This is now balanced chemical equation. So the question is saying 10 volume of hydrogen is present, so it is 10 volume. 5 volume of oxygen is present, so it is 5 volume, right? So water vapor कितना produce होगा? It will be 10 volume, right? So the answer will be 10 volume. Coming to the question number 27.
So question number 27 now. So question number 27 is convert the following into basic units. So first is 28.7 picometer, second is 15.15 picometer, and third is 25365 mg. So बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है तो पिकोमीटर के लिए हमें मीटर में कैलकुलेट, राइट, एंड mg का हमें kg में कैलकुलेट करना है. So 1 picometer is equal to 10 to the minus 12 meter, right? So इसका आंसर क्या होगा 28.7 into 10 to the power minus 12. और इसे क्या लिख सकते हैं 2.87. अगर हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होते हैं तो पावर 10 to power 1 ऐड हो जाता है. So 2.87 into 10 to power minus 11, right? Minus 12 plus 1 will be equal to 10 power minus 11 meter. Similarly, 15.15 into 10 power minus 12, or we can write 1.515 into 10 power minus 11 meter. Similarly, 1 mg equal to 25365 mg. So 1 mg equal to 10 power minus 3 gram और 10 to power minus 6 kg, राइट. इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ में कितने डेसिमल आना है 1 2 3 4. सो 4 डेसिमल हमें लेफ्ट शिफ्ट होना है. सो 2.53 इंटू 10 to power 4 इंटू 10 to power minus 6 kg. सो जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो पावर ऐड होती है. तो आंसर विल बी 2.53 into 10 to power minus 2 kg, right? So this is how we convert the unit into basic unit, right? So next question, question number 28. So question number 28. So question number 28 is which one of the following have largest number of atom? We have to calculate which one of the following have largest number of atom. So the first is 1 gram AU. We know that 1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms of AU if we are considering here AU. So 1 mole is equal to 197 gram of AU or is equal to 6.022 into 10 to power 23 atoms of AU, right? So 1 gram of AU will be equal to 1 divided by 197, right? अगर हम 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 divided by 197 into 6.022 into 10 to power 23 atoms, right? So it will be equal to 6.022 into 10 to power 23 divided by 197, right? Similarly, option B is 1 gram Na. So 6.022 into 10 to power 23. सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, राइट? सो वी विल राइट हियर 23. थर्ड इज 1 ग्राम Li. So 6.022 into 10 to power 23 divided by 7. D is 1 gram Cl2. So 6.022 into 10 to power 23. फ्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, राइट? बट यहाँ पे मॉलिक्यूल है Cl2, तो 35.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल बी इक्वल टू 71, राइट? सो 6.022 into 10 power 23 divided by 71.
1. Getting? So on solving this, the largest value will be equal to the largest number of atom. Getting? Okay. So question number 29 now. So question number 29 is, we have to calculate the molarity and mole fraction of ethanol is given 0.040 and density of water is equal to 1. So we have to calculate the molarity and mole fraction of ethanol is given, density is given, right? So first we will calculate the number of moles of ethanol and the number of moles of water. So for water, number of moles will be equal to 1000 gram. Density is 1, so we can write 1000 gram divided by 18, right? So 1000 divided by 18 will be equal to 55.55. So number of mole of water will be 55.55. So we can write here 55.55. So when we have to calculate the number of mole of ethanol, so mole fraction of ethanol, so we can write here mole fraction of ethanol is equal to number of mole of ethanol divided by number of mole of ethanol plus number of mole of water, right? यही होता है mole fraction is equal to number of mole of the concerned compound divided by total divided by solution, right? So यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता है 0.040, इथेनॉल नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल नहीं पता है, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता है 55.55, राइट? तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 2.314. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.314, राइट? ये तो आप सॉल्व कर सकते हो. सो इट विल बी 2.314. जब हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 2.314 आ गया इथेनॉल का. सो 2.314 एंड वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है. सो 1 लीटर. सो 2.314 divided by 1, right? So it will be equal to 2.314. So equal to 2.314 molar. So answer will be 2.314, right? So this is how we solve the molarity in this question, right? So that's all for today. So if you like this video, then please subscribe it. Thank you for watching the video.